Hello everyone. We are doing chapter number 4, Animal Kingdom. This is the second video of the chapter, class 11th, Biology. In this video, we will cover the following phylums: Ctenophora, PLATYHELMINTHES, SPINY-SKINNED, ANNELIDA, ARTHROPODA, MOLLUSCA and Echinodermata. First of all, let us start with the phylum Ctenophora. Ctenophoras are also called as comb jellies or sea walnuts. They are also called as sea walnuts. Now, what are the characteristic features of the organisms found in this phylum? First of all, they have got the tissue grade level of organization. Means cells are organized to form the tissues. Okay, so tissue level of organization is found in Ctenophoras. What type of symmetry they have? They have got the radial symmetry. Means if we cut the organism from the any vertical plane, it will be divided into two equal halves. Next character is they are diploblastic, means they have got two germinal layer. Diplo means two germinal layers, ectoderm and endoderm are there, and all the parts of the body are formed from ectoderm and endoderm only. They are acoelomate, no coelom is present in this phylum Ctenophora. Habit and habitat, they are exclusively marine. Solitary means they may live alone, or pelagic, they are found on the upper part of the water. Okay, they are pelagic. Digestive system, what type of digestive system they have? It is incomplete, means they have got a single opening, mouth or anus, whatever you want to say. The digestion is intracellular and extracellular, means the digestion may take place within the cell and outside the cell also. Okay. Reproduction takes place only by the sexual means. Means two partners should be there, two sexes should be there, male and female. They are hermaphrodite because both the sexes are present in a single individual. Fertilization, where the sperms and the eggs fertilize, they fertilize external, outside the body of the organism. And development is indirect, means they have got the larval stage in between. What are the unique features of the organisms found in Ctenophora? Locomotion is by 8 vertical external rows of ciliated comb plates. They have got the 8 plates which make them hard. That's why we call them as walnuts. अखरोट की तरह से दिखते हैं. And tentacles are present. Another unique feature is they have the ability to emit light. They produce light. आप देख रहे हो नीचे light produce कर रहे हैं organism, and this phenomenon is called as bioluminescence. Bio means living. Living organisms are producing light. They are emitting lights. Examples are Pleurobrachia and Ctenoplana. These are the examples of organisms found in the phylum Ctenophora. Next phylum is Platyhelminthes. These are the flatworms, just like a ribbon. They are the flatworms. Grades of organization, they have got the organs and organ systems are found there. Means now the tissues are coming together and forming the organs, and organs are coming together to form the organ system. Symmetry, diagram की तरफ देखिए. The symmetry is bilateral. It is divided into right and left part if we cut it from top to bottom. How many germinal layers are there? 3. They are triplo. Triplo means 3. Triploblastic, 3 germinal layers are there. Ectoderm, mesoderm and endoderm, and all the body parts are formed from these 3 layers. Coelom. They do not have coelom, so they are acoelomate. They are acoelomate. Habit and habitat, they are mainly aquatic, पानी में मिलते हैं.
some are endoparasite living inside the body of the host, किसी की बॉडी के अंदर रहते हैं, and some are free living like planaria. Tapeworm and liver fluke, they are the parasites. Digestive system, it is incomplete. They have got a single opening called mouth and anus both, which act as a mouth as well as anus. Single opening is there, so digestive system is incomplete. Reproduction, both by asexual and sexual means. Asexual is by fragmentation. आप डायग्राम की तरफ देखिए, यहाँ पर प्लेनेरिया डिवाइड हो रहा है इंटू, ब्रेक हो रहा है इंटू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स, एंड ईच फ्रेगमेंट इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट प्लेनेरिया. This is called fragmentation. And second type of reproduction is sexual. In this, the organism is hermaphrodite. Both the sexes are present in a single individual. नीचे वाला diagram देखिए, testes and ovaries are present in one individual. Ovaries are pink shade से दिखाया गया है and testes light blue color से दिखाया गया है. Fertilization is internal inside the body of the organism, and development is indirect. Means there is a larval stage, you can see. Unique features of this Platyhelminthes phylum: excretion is by flame cells. They have got a special cells called flame cells or protonephridia, which help in the removal of waste product from the body. Next feature is body is unsegmented, dorso-ventrally flattened body है, just like a ribbon shape, and but except the tapeworms. Except the tapeworms, other organisms have got the unsegmented dorso-ventrally flattened body. But tapeworms have the segmented body. देखिए नीचे बना हुआ है डायग्राम में, tapeworms have the segmented body. Unique features now, Platyhelminthes, they have got the hooks and suckers. See the diagram, hooks are there and suckers are there in the parasitic form, which help them to attach to the host. इंटेस्टाइन में अगर ये हमारी बॉडी में चले गए हैं तो ये हुक्स और सर्कल से हमारी बॉडी के इंटेस्टाइन से ये फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं. सम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट थ्रू देयर बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से ही ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एग्जाम्पल्स आर टीनिया सोलियम यानी पोक टेपवर्म एंड फेसियोला लिवर फ्लूक एंड प्लेनेरिया आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस. Next is Echinodermata. Grades of organization. Organ system is there. Proper system is there. Organ system are there in this phylum. Symmetry is bilateral. Germinal layer triploblastic. Remember this diagram always in front of you. Ectoderm is blue. Mesoderm is pink shaped. And green color का जो है वो यहाँ पर सीलोम बना हुआ है, एंड at the inner is the endoderm. So there are three layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. They are triploblastic. Pseudocoelomate, जो हम बता रहे हैं कि जो ग्रीन कलर की कैविटी है, this is the false coelom. Why we call it false coelom? Because there is no mesoderm inside. Inner lining is endoderm, outer is mesoderm. So it is not the mesoderm which is present inside also. It is not lined by the mesoderm on both the sides. So it is pseudo, false coelom. Habit and habitat, they are aquatic and terrestrial. Terrestrial means living on the land. Aquatic means living in the water. Free living भी हो सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं on plants and animals. Digestive system is a complete. See the digestive system of the organism, having the mouth, having the different parts, pharynx, intestine like this, and the anus at the end. So they have got the complete digestive system. Tubular alimentary canal with a well developed muscular pharynx. Pharynx भी muscular है, having the muscles. Reproduction, these organisms are dioecious, means sexes are separate. Reproduction sexual होगा. Fertilization internal है inside the body of the organism, and development is direct or indirect.
Unique features of the organisms found in this phylum are, first, body is circular, that's why we call them as the roundworms also. Syncytial epidermis means एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, बट देर इज नो पार्टीशन इन बिटवीन, सो इट इज मल्टी न्यूक्लिएट एपिडर्मिस एंड दे हैव गॉट द थिक क्यूटिकल. देर इज एन एक्सक्रीटरी ट्यूब टू रिमूव द बॉडी वेस्ट. यहाँ पर एक एक्सक्रीशन के लिए भी एक ट्यूब है जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है. ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पर ग्रे कलर की ट्यूब बनाया हुआ है, एक्सक्रीटरी ट्यूब लिखा हुआ है, और नीचे वाला डायग्राम देखिए तो यहाँ पर ब्राउन कलर का एक्सक्रीटरी ट्यूब बनाया हुआ है जो बाहर एक्सक्रीटरी पोर से ओपन हो रहा है. सो दे हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी. They show sexual dimorphism, means we can see morphological difference between the male and female. Females are long and males are shorter than the females. और males में देखिए एक जो tail part है it is slightly curved, but in female it is straight. Examples of the organisms found in this phylum are Ascaris यानी roundworm, Ankylostoma, hookworm, and Vaucheria, filaria worm. See the diagram. The person is suffering from a disease called elephantiasis caused by the filaria worm. बिल्कुल जो पैर हैं, जो लेग्स हैं, बिल्कुल एलिफेंट्स की तरह से हो गई हैं, एलिफेंट की लेग्स की तरह से हो गई हैं. एलिफेंटिएसिस बोला जाता है इसे. Next phylum is phylum Annelida. The organisms found in this group are called as ringed or segmented worm. Body is segmented. बहुत सारे segments दिखाई देंगे body के ऊपर. First character, they have got the organ system present, bilateral symmetry, triploblastic having 3 layers, 3 germinal layers, coelomate having the proper coelom lined by the mesoderm on both the side. Terrestrial, freshwater और marine कहीं पर भी मिल सकते हैं. They may be the free living or they may be parasitic. Parasite means living on the other organism. Other organism is called the host. Digestive system is complete. See the diagram. There is complete digestive system starting from the mouth and ending in the anus. बीच में pharynx, esophagus, crop, gizzard, intestine, all the parts are there. डायग्राम जो ऊपर वाला है वो देखिए आप ध्यान से. You can find the complete digestive system. Respiratory system. Cutaneous respiration is there. Cutaneous means through the skin. यहाँ देखिए अर्थवॉर्म को ऑक्सीजन स्किन से ही अंदर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है. But some have got the branchial respiration, they have got the gills for the respiration. Circulatory system is closed. See the blood vessels. Blood is flowing in the vessels. Closed circulatory system is there in the Annelida. Reproduction. Bisexual means male and female sexes are there. Earthworms and leeches are monoecious. Means both the sexes are present, sex organs are present in single organism. But in Nereis, they are dioecious. Sexes are separate. Development is indirect. Unique feature, body is segmented. Segmentation like rings are there on the body. There are longitudinal and circular muscles. Diagram देखिए नीचे वाला. यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो वन साइड से दूसरी साइड पर जा रही हैं और एक सर्कुलर मसल्स हैं जो सेंटर में दिखाई दे रही हैं. थ्रू द हेल्प ऑफ दीज मसल्स दे मूव. लोकोमोशन इज देयर. नेक्स्ट दे हैव गॉट फॉर द लोकोमोशन दे हैव गॉट द लोकोमोटरी ऑर्गन्स कॉल्ड सीटे इन अर्थवॉर्म. हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्किन के ऊपर जो सीटे हैं दिखाई दे रहे हैं आपको डायग्राम में. सीटे को लेबल किया गया है इन्होंने फर्स्ट डायग्राम में. देखिए सीटे आर देयर. और पैरापोडिया इन नेरीज. और नेरीज में क्या होते हैं? पैरापोडिया. ओके, सो पैरापोडिया हेल्प इन द मूवमेंट एंड सीटे ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट और लोकोमोशन. And excretion, very important. They have got the nephridia for excretion of waste product.
डायग्राम देखिए, लेबल किया हुआ है, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इन्होंने, एंड दिस इज द नेफ्रीडिया विच हेल्प इन द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. दे हैव गॉट द पेयर्ड गैंग्लिया. पेयर्ड गैंग्लिया है, पेयर में मिल रहे हैं गैंग्लिया, connected by lateral nerves to double ventral nerve cord. They have got the double ventral nerve cord and these ganglia attached to this double ventral nerve cord by lateral nerves. Okay. Examples of Annelida are earthworm, Ferritima, leech, Hirudinaria and Nere's sandworm. Now come to Arthropoda. This is the largest phylum that includes over 2/3 of all named species. Largest phylum है. They have got the jointed legs. Arthro means joint. Poda means legs. They have got the jointed legs. Organ system of organization is found. We can find the organ system in these organisms. Symmetry is bilateral. देख लीजिए डायग्राम में, इसको दो पार्ट्स में, लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है फ्रॉम द सेंटर. ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर्स हैं, एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 3 लेयर्स. सीलोमेट है, प्रॉपर सीलोम है, ट्रू सीलोम है. डायग्राम देखिए, एक्टोडर्म आउटसाइड ब्लू कलर का, मेसोडर्म पिंक कलर का बनाया हुआ है, वो आउटसाइड है, और व्हाइट में जो सेंटर में है, जो पिंक के बाद व्हाइट है, दिस इज द सीलोम. और सीलोम के अंदर वाली साइड भी जो लेयर है वो भी मेसोडर्म से बनी हुई है. तो वन साइड एंड सेकेंड साइड, बोथ द साइड्स ऑफ द कैविटी आर लाइंड बाय द मेसोडर्म, और अंदर वाले मेसोडर्म के पास क्या है, एंडोडर्म. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दीज आर द सीलोमेट. ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट. दे आर कॉस्मोपॉलिटन, फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. Digestive system is complete. See the diagram above, starting from the mouth, ending in the anus, having all the different parts, foregut, midgut, hindgut. And there is a Malpighian tubules also, purple color का, pink color का देख लीजिए, Malpighian tubules हैं, they help in the excretion. Respiratory system कैसा है? Some have got the gills, some have got the book gills, some have got the trachea and some have got the book lungs. अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको डिफरेंट आर्थ्रोपोडाज में मिलेंगे. बुक गिल्स ऑफ क्रस्टेशिया शो किया गया है. ट्रेकिया यू कैन फाइंड इन द इंसेक्टा क्लास, एंड स्कॉर्पियन में यू कैन फाइंड द बुक लंग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन. हार्ट ब्लड को पंप कर देगा और ब्लड विल फ्लो इन द कैविटी. नो ब्लड वेसल्स आर देयर. हार्ट देखिए कितने चैम्बर का हार्ट है, मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट. ब्राउन कलर का डायग्राम है, साइड में देखिए, जो जितने चैम्बर सेंटर में दिखाए गए हैं, दे आर द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. रिप्रोडक्शन, दे आर मोस्टली डायोशियस, मीन्स मेल फीमेल अलग हैं. यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. मोस्टली दे आर ओवीपेरस, दे आर एग लेइंग. यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई इज लेइंग एग ऑन द लीव्स. डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिल सकता है. यूनिक फीचर्स, ये डायग्राम ऊपर का आप बिल्कुल अपने माइंड में रखिए, आप इसको कॉन्सेंट्रेट करके देखिए. दे हैव गॉट द जॉइंटेड अपेंडेजेस. डायग्राम में नीचे लिखा हुआ है जॉइंटेड लेग्स हैं. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हेड ब्लू कलर से लिखा हुआ है, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में बॉडी डिवाइडेड है. बॉडी इज कवर्ड बाय अ काइटिनस क्यूटिकल कॉल्ड एक्सोस्केलेटन. कॉकरोच का माइंड में रखिए, कॉकरोच के ऊपर जो ब्राउन कवरिंग है, दिस इज एक्सोस्केलेटन. एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय Malpighian tubules, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, Malpighian tubules इन द डायग्राम. सो Malpighian tubules हेल्प इन द एक्सक्रीशन. यहाँ पर भी बने हुए हैं, रेड कलर से सर्कल किया हुआ है Malpighian tubules को. सेंसरी ऑर्गन्स आर एंटीनी, सबसे फ्रंट में एंटीनी है, कंपाउंड एंड सिंपल आइज, एंड स्टेटोसिस्ट which help in the act as a balancing organs. Here are some examples of phylum Arthropoda: spiders, scorpion, crabs, prawns and various insects. Economically important insects का देखिए, honey bees, bombyx, lessifer leca, और vectors देखिए, anopheles, culex, aedes,
हाउस फ्लाइज, दे एक्ट एज अ वेक्टर फॉर मैनी डिजीजेज। ग्रिगेरियस पेस्ट देखिए जो ग्रुप में मूव करते हैं, लोकस्ट। एंड लिविंग फॉसिल देखिए, एग्जाम्पल है लिमुलस, किंग क्रैब। वाई वी कॉल इट एज अ लिविंग फॉसिल? क्योंकि जब से ये बना है ऑर्गेनिज्म तब से इसमें देर इज नो चेंज यू कैन फाइंड इन दिस ऑर्गेनिज्म, नो चेंज इज सीन। बिल्कुल सिमिलर है, जैसे पहले था आज भी वैसे ही है, यू कैन नॉट फाइंड एनी चेंज, दैट्स वाई वी कॉल देम एज अ लिविंग फॉसिल। नाउ कम टू phylum Mollusca. This is the second largest phylum and the organisms are soft bodied animals. Organ system organization, bilateral symmetry, diagram clear है आपके सामने है। Triploblastic, again the same diagram having 3 germinal layers, ectoderm, mesoderm, endoderm. Coelomate, again the same diagram जो अभी हम पहले भी देख चुके हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एंड मीजोडर्म दोनों साइड पर मीजोडर्म है और बीच में एक कैविटी है कॉल्ड सीलोम, सीलोमेट है ये। दे आर एक्वेटिक एंड फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट हैविंग 2 ओपनिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ एंडिंग इन द एनस। माउथ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बने हुए हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड द लास्ट इज एनस। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म। डायग्राम ऊपर वाला देखिए, गिल्स बने हुए हैं लीफ लाइक। एंड पल्मोनरी सैक इन द टेरेस्ट्रियल फॉर्म, जो अर्थ पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, मोलस्का को बिलोंग करते हैं, दे हैव गॉट द पल्मोनरी सैक फॉर द रेस्पिरेशन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन, इट इज नॉट, द ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन द वेसल्स। रिप्रोडक्शन डायोशियस, दे आर डायोशियस, मेल फीमेल अलग अलग हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। दे आर एग लेइंग, ओवीपेरस है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों हो सकता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। यूनिक फीचर, द बॉडी इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। हेड, आगे वाला फ्रंट लिखा हुआ है, विसरल मास जो सेंटर में लिखा हुआ है, सारा विसरल बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड द लोअर वाला देखिए, दिस इज द मस्कुलर फुट। हेड के पास देखिए देयर इज अ सेंसरी टेंटिकल एंड द बॉडी हैज गॉट द कैल्केरियस शेल। शेल के अंदर होता है ये ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी। सो दे हैव गॉट द कवरिंग, यूनिवॉल्व, बाइवॉल्व, दे आर द organisms are present inside this shell. Unique features, they have got the gills, leaf like gills है, डायग्राम ये देख लीजिए दोबारा से आप, leaf like gills are there for the respiration and excretion. And 2 more things are there, mantle and radula. What is mantle? The membrane which covers visceral mass. देखिए जो पूरा visceral mass है, intestine का जो पार्ट है या पूरा पार्ट है, it is covered by a lining called as mantle. And the space between the mantle and the hump, ऊपर जो hump है और जो mantle है, इन दोनों के बीच की जो space है, that is called as mantle cavity. Radula, it is a file-like rasping organ present in the mouth. नीचे का डायग्राम देखिए, माउथ में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है कॉल्ड रेडुला, वो फाइल लाइक है, जैसे शार्पनिंग करने के लिए होता है, जैसे फूड को ये फूड अंदर लेने के लिए हेल्प करता है. इट इज यूज फॉर फीडिंग. एग्जाम्पल्स ऑफ मोलस्का आर पाइला, एप्पल स्नेल, पर्ल ऑयस्टर, कटल फिश, इट इज द नेम इज फिश बट इट इज नॉट अ फिश, सीपिया, लॉलीगो, स्क्विड, octopus, devilfish, sea hare, tusk shell and chiton. So you have to remember both the names for examination point of view. Next is phylum Echinodermata. They are also called as spiny-skinned animals. इनकी skin के ऊपर spines होते हैं. Organ system organization मिलेगा. Adults are radial symmetrical and larvae are bilateral symmetrical. डायग्राम देख लीजिए, जो स्टारफिश ऊपर बनाई हुई है ये इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, एनी वर्टिकल प्लेन, बट जो लार्वी हैं वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं. जर्मिनल लेयर 3 जर्म लेयर, सेम डायग्राम है, अगेन एंड अगेन इट इज कमिंग. 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सीलोमेट, अगेन द सेम डायग्राम.
True coelom is present. Exclusively marine, exclusively, only found in the sea. Digestive system is complete. You can see the diagram. नीचे वाला diagram देख लीजिए. Mouth lower side पर है, anus upper side पर है. Ventral mouth है and dorsal anus है. Respiration is by dermal branchi. Skin के ऊपर skin gills होते हैं जो help करते हैं respiration में. Dermal branchi, and they have got the tube feet also which help in the locomotion. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन. यहाँ पर जो डायग्राम है वहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैड्रिपोराइड बना हुआ है यहाँ पर जहाँ से वाटर एंटर करता है, और रेडियल कैनाल्स हैं, 5 रेडियल कैनाल्स हैं. 1 रेडियल कैनाल इज गोइंग इन 1 आर्म, ओके, एंड 2 फीट्स आर देयर along with the radial canal. Remember this structure. This is a water vascular system, help in circulation. It is open type. Reproduction dioecious. Organisms separate हैं, sexes are separate. Fertilization external है. Development is indirect, means you find many type of larvae here, and ciliated free swimming larvae can be seen. Unique feature क्या है? They have got an endoskeleton. अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऊपर का स्किन के ऊपर स्केलेटन था, but they have got the endoskeleton of calcareous ossicles. Spiny bodied है ये. Head absent है. Water vascular system present है. Excretory system absent है. Water vascular system को ambulacral system भी कहते हैं. In this system, sea water enters through the porous plate called as madreporoid. अभी जो दिखाया था मैंने, मैड्रिपोराइड से वाटर एंटर करता है, उसके बाद वो रेडिएटिंग कैनाल्स, जो 5 रेडिएटिंग कैनाल्स हैं उसमें चला जाता है, एंड फ्रॉम द रेडिएटिंग कैनाल इट एंटर्स इनटू द ट्यूब फीट. जैसे जब वो ट्यूब फीट में एंटर करते हैं तो जो इनके फीट हैं वो दे स्टार्टेड मूविंग, वाटर के प्रेशर से वो मूव करने लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट द एनिमल मूव्स. इट्स फंक्शंस आर लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एक्सक्रीशन. फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, कैप्चर करना है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना है, रेस्पिरेशन करना है, लोकोमोशन करना है, सब में ये काम आता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम. एम्बुलेक्रल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स आर स्टारफिश, सी अर्चिन, इकाइनोकार्डियम, सी लिली, brittle star and sea cucumber. I am telling you the one name, you remember the second one. So that's all for the today. Do the question given in the box. Wait for my next video. Subscribe the channel for getting the information about my next video. Thank you so